Hello and welcome to all of you on our financial podcast, your go to destination for all things money, investing, and financial planning. I'm your host, Siddharth Singh Bhaisora, and today we will be exploring how to reach your financial goals in 2020. With us, we have a very special guest to help us understand and deep dive into this crucial topic. Our guest today is Anmol Gupta, a financial planner by profession and an educator by passion. Anmol is the founder of Seven Prosper, a platform dedicated to making high quality financial planning services both affordable and accessible. His engaging workshops have reached over 20,000 people, employees in notable companies, teaching the ins and outs of tax saving strategies and comprehensive financial planning. Anmol has also contributed to renowned publications such as Money Control, Financial Express, and The Times with his enlightening articles. You'll also find him actively on LinkedIn sharing his wisdom. His love for teaching led him to tutor a range of subjects, including economics, finance, and programming to over 1,000 students from school to postgraduate level. Welcome to the show, Anmol. It's a pleasure to have you here at Wright Research. Thank you so much. Thank you so much, Siddharth, for having me here. I look forward to having a very fruitful discussion with all of you. Thanks so much. Absolutely, Anmol. I hope we really deep dive into this topic. Before we dive into the conversation, though, I just wanted to understand your journey a little bit, and I think it'll really help the viewers as well as myself to understand, what has your journey been like as a financial planner and an educator, and if you could just give us a little bit more depth to it, that'd be great. Sure, Siddharth. So actually, I became an educator by accident. I was in the final year of my master's. I was doing master's economics from Pitfalls, and then out of blue, one day I was just having some tea with a group of friends. One of my friends just told me that there's an online website where you can teach students and make money in dollars. So Okay. final year था कुछ काम तो था नहीं करने को. So I just started with that. I started teaching economics, finance, accounting. So I was good with economics actually. So I started teaching on that platform online. So, and I realized that I was actually a good teacher. Great. So it worked really great for me. I started making more money than what my job could offer me. So that gave me the confidence to even quit my job on the very first day, the job that I'd secured through my campus placement. So that's how I just, by accident, I became an educator. Then I left my job and I was just tutoring for full time at that point of time. And I was just exploring कि अभी कुछ startup कर सकते हैं या कुछ let's start something on my own. So पहले कुछ और कर रहा था. I was trying to do something in the food space, but that didn't work out. और उसमें इतना मजा नहीं आ रहा था. And but when I was trying to raise funds for that small amount of money from my friends and family to start up that venture, I realized the kind of financial illiteracy people around me had. कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि डेट क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, स्टॉक्स क्या होता है, किसमें कब पैसा डालना चाहिए, किसमें कितनी रिस्क होती है, ये सब बिल्कुल पता नहीं था लोगों को. सो at that point of time I got that this looks like an untapped opportunity, right? लोगों को नहीं पता पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है. So why is that the case? So this was 2014. So I started exploring the market कि क्या चल रहा है, फाइनेंशियल एडवाइजरी होती भी नहीं होती है, नहीं होती मार्केट में, कौन एडवाइस देता लोगों को, राइट? So I studied all the regulations. So at that point of time, mostly market was dominated by mutual fund distributors, mostly by mutual insurance agents, LIC agents जो होते हैं. There are more than a million agents, right? Yeah. या फिर बैंक के जो RMs होते हैं वो are again distributors of mutual funds या फिर आपकी जो policies होती है. Yeah. And there's an inherent conflict of interest in that business. वो आपको वही पॉलिसी बेचेंगे, वही स्कीम बेचेंगे जिसमें उनको ज्यादा कमीशन मिल रहा होगा. They don't do any kind of financial planning for you. उनको आपके गोल्स से कुछ खास मतलब नहीं है. They are more concerned about selling their products. और CB रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट, ये वाला प्रोफेशन बहुत नया था उस टाइम भी. There were hardly about 100-200 registered investment advisors in the country at that point of time. 2013 में regulations आए थे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के. So I decided कि लाइसेंस तो ये वाला लेंगे which is meant for eliminating the conflict of interest, CB registered investment advisor. Let's operate with this license. और बाकी जो एडवाइजर्स भी थे मार्केट में, CB registered investment advisors, they were mostly catering to high net worth individuals. आपके पास 2-5 करोड़ 10 करोड़ होंगे तभी आप किसी एडवाइजर को हायर कर सकते हो, क्योंकि वो 50,000 1 लाख 2 लाख आपसे फीस तो लेगा ही कम से कम, इवन हायर. मतलब ये तो यहाँ से स्टार्ट होता है. So that's why the service was not accessible and affordable for the masses. So the idea was to make this high quality financial planning service or investment advisory service accessible and affordable for the people who cannot go to such kind of expensive advisors. और उसमें टेक्नोलॉजी का होना बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज मैनुअली आप करोगे तो यू कांट जस्टिफाई द कॉस्ट
मतलब आपको चार्ज करना ही पड़ेगा अपना, अगर इतना पर्सनलाइज सर्विस या ह्यूमन को पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व अगर करोगे तो. So yeah, that was the idea. That's how I started getting into this industry. That's how I started with this. Yeah. Oh wow, okay. That's really wonderful. I think you've been around for a while now, given that it's Yeah. 2013, 2014 ki baat ho rahi hai. And obviously, there is conflict of interest with a lot of these sort of peddlers, let's call it that, for lack of a Correct. better word. Just wanted to understand, I think, this is probably the right way to sort of move into the topic that we have at hand today, which is that, how to sort of reach your financial goals in the current period, right? Right. And what I really wanted to understand from you, given your sort of vast experience, not just sort of in your own personal life, but even from a professional perspective, having spoken to so many, people and helping them with their financial planning, could you just sort of shed some light into what is the importance of goal setting from not just for the advanced guys, but let's talk about it from a more beginner's perspective, and then we can sort of get into it a little bit more from there. So, Subhagad, see, the fundamental question is why are you earning money, right? Or why do you even need money? आपको पैसा चाहिए क्योंकि आपकी कुछ ना कुछ नीड्स है, या फिर कुछ ना कुछ आपकी वांट्स है. नीड्स आपकी करंट हो सकती है, रोटी कपड़ा मकान इंटरनेट, राइट, जो करंट नीड्स होती है, फ्यूल हो गया. कुछ फ्यूचर की नीड्स हो सकती है, आपको घर बनाना है, आपको गाड़ी खरीदनी है. एक टाइम के बाद आप काम भी नहीं कर पाओगे, तो यू हैव टू रिटायर एट अ सर्टेन एज. मे बी इट कुड बी 50, इट कुड बी 55, 68, varies from person to person, right? But you'll not earn after a certain age, and you are going to survive for 25, 30 years post your retirement, hopefully. तो आपके पास पैसा होना चाहिए. Now, how do you secure these things? So these are called financial goals, जो आपको पूरे करने हैं. और फ्यूचर के कुछ जो बड़े बड़े गोल्स होते हैं, घर गाड़ी रिटायरमेंट बच्चों का एजुकेशन, इनके लिए जो अमाउंट रिक्वायर्ड होता है, that's not something which you can fulfill just with your monthly income. इसमें आपको पहले से सेव करके उस पैसे को इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सो इसलिए फ्यूचर के गोल सेट करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज these are थिंग्स व्हिच विल नॉट बी एबल टू फुलफिल जस्ट विथ योर मंथली इनकम. सो दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग. अगर सब कुछ मंथली इनकम से आपकी पूरा हो जाता तो आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती. जैसे आप करंट नीड्स के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आप उसको अपनी मंथली इनकम में से एक बजट निकालते हो कि इतना मैं खर्चा करूंगा या इतना मैं अपने लग्जरी पे खर्च करूंगा. बट कुछ गोल्स होते हैं जिसके लिए आपको बहुत डिस्प्रपोर्शनेटली ज्यादा अमाउंट चाहिए होता है, उनको हम फाइनेंशियल गोल्स बोलते हैं. Got it. No, I think that's right. So I think goal setting is definitely a cornerstone or a foundation, let's call it, for financial planning, right? मतलब उसके बिना you're just sort of wandering around, you're not really sure where you're going ultimately. Correct. And I think understanding why we need to sort of set these financial goals helps us sort of visualize what is my path to success, how do I sort of move ahead and sort of achieve all my dreams and goals and ambitions, etc. Correct. So yeah, absolutely right. In terms of, we've established, why it's important. We're trying to sort of understand maybe in your aspects and your sort of dealings with a lot of these people, what are the type of most common financial goals you're seeing today, people are setting in the current year, let's say, right, in 2023? So my experience for the past like 4-5 years, recent 4-5 years has been with people who are in their late 20s or early 30s. Okay. तो इस एज पे टिपिकली लोग शादी कर रहे होते हैं या शादी कर चुके होते हैं. दे आर स्टार्टिंग देयर मैरिड लाइफ, जो सेटल्ड लाइफ होती है ना, मतलब दे आर स्टार्टिंग विद देयर लाइफ. सो गोल्स एकदम टिपिकल गोल्स होते हैं जो किसी की लाइफ में होता है. घर 5-7 साल बाद घर बनाना है, 10 साल बाद घर बनाना है. घर सबको बनाना ही होता है. फिर गाड़ी खरीदनी होती है. गाड़ी का गोल यूजुअली लोगों का 1 या 2 साल के अंदर होता है इस एज पे. दे वांट टू गेट दैट कार बिकॉज दे नीड इट. ऑफिस के लिए चाहिए, भैया बच्चा होने वाला है, बच्चा हो गया है, सो दे नीड दैट कार. उसके अलावा वेकेशन इज अ वेरी कॉमन गोल नाउ डेज. मतलब इनफैक्ट मतलब ऐसा नहीं है कि 2 या 3 साल में लोग वेकेशन पे जा रहे हैं. लॉट ऑफ पीपल दैट वी डील विद एटलीस्ट have a very significant budget for yearly vacations, or vacation per year is not a very uncommon thing, even for someone who's earning like 17-18 lakh, right? So income का लोग 10%, 15% vacation के towards भी allocate कर रहे हैं. So that's something I've been seeing with the kind of clients that we are dealing with. इसके अलावा retirement is something that we insist people to plan for. इस एज पे लोगों को विजुलाइज होता नहीं, बट वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट. अगर आप नहीं इसको प्लान करोगे तो काफी दिक्कत हो जाएगी आपको 50-60 के बाद. एंड इट्स द बेस्ट टाइम टू लाइक रिटायरमेंट. ऐसा गोल है जिसके लिए आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेटर होगा, उतना आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले पाओगे. सो लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं आती, बट वी हेल्प देम विजुलाइज दैट कि आज आप 5,000 10 साल को महीना भी इन्वेस्ट कर रहे हो रिटायरमेंट के लिए, दैट्स गोइंग टू टर्न इनटू अ ह्यूज कॉर्पस एट द एंड ऑफ 30 years.
most of the goals common होते हैं, but जो uncommon नहीं होते हैं but important होते हैं, उसके लिए मतलब that's what we do, that's what our job is, to help people realize कि life में इन चीजों के अलावा भी और क्या आ सकता है. Retirement is something that you guys are obviously pushing for, and we all know compounding effect hota hai. Retirement is something that you should plan for, but I think people just don't realize how important it is and how you can sort of achieve it if you just do the right steps, which is at an early age put up, whatever, 10, 15, 20%, whatever it is, Correct. of your income towards those goals, and just sort of help you realize. No, I think that's very interesting. And it's not surprising that people just don't plan for it ultimately, I suppose, right? But okay, in the current environment, right, like obviously the market has been booming right now, but for the last year and maybe in the last few months as well, there was this inflation fear. People were sort of really worried about the macroeconomic climate was sort of shifting and changing, and still maybe to a degree globally also thoda uncertain hai maybe, right? Thoda in this scenario, what is it that you would recommend, in this economic climate, that people should consider when they're sort of setting their financial goals for the current year, for the future, etc.? But in this context, what would be your sort of thought process here? Right. So see, I'll tell you my views with whatever understanding I have of macroeconomics. जब भी हम फाइनेंशियल गोल भी सेट करते हैं, वी डिफाइन टू थिंग्स. एक तो आपका टाइम होराइजन क्या है. फॉर एग्जांपल अगर आपको घर खरीदना है तो आपको घर कब खरीदना है, विच कुड बी समथिंग लाइक 10 साल बाद. और उस घर को खरीदने के लिए आपको अमाउंट कितना चाहिए इन टुडेज टर्म्स. आज अगर आप वो घर खरीद रहे होते तो वो घर मे बी 1 करोड़ कॉस्ट कर रहा होता है. बट देन ऑन ऑन दैट प्रेजेंट वैल्यू, जो आप करंट वैल्यू है आपके घर की, उस पर हम इन्फ्लेशन अप्लाई करते हैं. राइट. Now we are going to take certain assumption about that inflation based on the historical data, based on the current status of the economy. या economic stage पे है अभी, right? Yeah. So typically for real estate, we would take an inflation rate of around 8 to 10%, right? Okay. तो normal जो inflation rate अभी इंडिया का है वो 5-6% के आसपास चल रहा है. Yeah. But sector wise भी we take different inflation rates. Real estate might do at a higher growth rate, but वो real estate का काफी variable भी होता है, location पे location भी vary करता है. So one thing that you can do is, अगर आपको थोड़ा conservative चलना है, so जो भी economic का inflation rate चल रहा है, like 6%, 7% cannot be a sustained inflation rate for an economy. अगर ये 10 साल तक चलता रहा तो बहुत economy में बहुत problem हो जाएगी. Ultimately, government will have to bring that inflation down from there. So we hope that inflation is going to come down. In the long run, the average is not going to be like 6-7%. तो शॉर्ट टर्म में जो फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, इकोनॉमिक साइकिल्स भी आती है, इंटरेस्ट रेट की एक साइकिल चलती है, बढ़ता है घटता है, ये सब चलता ही रहेगा. मतलब बेस्ड ऑन क्या मैक्रो मतलब पूरे इकोनॉमिक वर्ल्ड में क्या चल रहा है, सबसे ये सब चीजें चलती रहेगी. बेस्ड ऑन ऑल दीज साइकिल्स वी हैव सीन दैट मार्केट्स हैव परफॉर्म वेल इवन आफ्टर अब्सॉर्बिंग ऑल दीज फ्लक्चुएशंस इन द पास्ट. पूरा हम 100 साल का डेटा भी निकाल के देखेंगे तो इट वर्क्स आउट. मतलब 10-15 साल के ऊपर स्टॉक मार्केट से जो वेरिएशन होता है रिटर्न्स में, दैट स्टार्ट स्टेबलाइजिंग. सो 10-15 साल मतलब इन माय इवन माय पर्सनल एनालिसिस जो मैंने स्टॉक मार्केट का किया है, 10 साल के ऊपर the risk with stock market investments becomes drastically low as compared to less than 10 years. Sure. Yeah. 15 साल के ऊपर और कम हो जाता है. तो 10-15 साल के आपको 10-15 साल के ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसमें इतना टेंशन लेने की बात नहीं होती, एज लॉन्ग एज यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द कंट्री कि देश नहीं डूबेगा. एटलीस्ट अगर देश में ओवरऑल बिजनेस बढ़ेंगे तो यू विल आल्सो ग्रो अलोंग विद दैट. सो फंडामेंटल कहीं ना कहीं तो अजम्पशन है, बट अजम्पशन बेस्ड फ्यूचर का हमको नहीं पता है. बट एनीवे यू कैन टेक मे बी +1-+2% हायर इन्फ्लेशन रेट इन योर व्हेन यू आर सेटिंग योर गोल्स. उससे आपका वो कवर अप हो जाएगा. ऐसा भी नहीं कि 5% ज्यादा इन्फ्लेशन रेट ले लिया. इन्फ्लेशन 5% चल रहा है तो आप 10% ले लो, बिकॉज उससे जो आपका गोल की वैल्यू आएगी फ्यूचर में वो ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी. वो फिर आपको अनरियलिस्टिक लग जाएगा. So long run में 2% का difference makes a lot of difference. You can do that to be on the conservative side. Got it. So I think what you're saying is obviously कि मतलब stagger करके करो. मतलब you can't just take a flat interest rate, flat inflation rate. You need to have obviously maybe short term में you focus on a little bit of higher interest rate, and then over time it has to go down. Otherwise, exactly. मतलब इकोनॉमी तो नहीं चलने वाला, नहीं तो मतलब शॉर्ट रन में तो आप कर सकते हो 10% कभी एक साल में कभी भी बढ़ जाती है चीजों की प्राइसेस. Correct. And this inflation rate obviously will depend to a degree also maybe from asset to asset, do you think, or no? Do you want to just assume, would it just be an assumption that it's a flat interest rate? Asset to asset वेरी करता है. नहीं, so goal to goal वेरी करता है. That's what you meant to ask. Education industry में inflation has been like 12-13% in the past 15-16 years. Yeah. I just took one data point, like my college fees itself. हम जब
उससे थे, उसके बाद से आज क्या फीस हो गई है. सो that was coming out to some 13%. It's around the same case with other colleges also. Yeah. Even when we define the financial goals of like child education for our clients, for education we take a higher inflation rate. Because that's usually been the trend. Real estate के लिए थोड़ा ज़्यादा होता है because वो again that's an asset which has like given in historically 8-10% return. Got it. Got it. No, I think okay, that's very interesting. I always thought about it more from an asset class perspective, but you're also talking about it from a financial goal perspective, which makes sense. That I think that relates. It correlates also. Okay, great. So I think my next question is that okay, we've understood, that there are these various sort of components, and what we need to do in the current economic scenario, etc. But what are the sort of, if I was to break down, financial goal setting, what are the essential components of effective personal financial planning? Can you sort of help us understand the different components that are there in this entire process? So see, financial plan में सबसे पहला component जो आता है, and that is having an emergency fund. That's the first thing we do for anyone. Yeah, that's the first. I call it the zeroth step of planning. आपके पास 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए बेस्ड ऑन योर जॉब. कितनी रिस्की आपकी जॉब है. अगर आपकी जॉब जाती है तो आपको अगर 6 महीने लगने वाले नई जॉब ढूंढने में, तो यू हैव एन इमरजेंसी फंड फॉर लाइक 8 months में भी. तो एंड पीपल रियली अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग एन इमरजेंसी फंड. उनको लगता है कि यार जैसे किसी का खर्चा अगर 50,000 रुपये महीने का है, और तो उससे उस हिसाब से इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट बन जाएगी 3 लाख रुपए, राइट. एंड वी वुड आस्क दैट पर्सन टू कीप दोस 3 लाख रुपीज इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड्स. अब वहाँ पे कंसर्न ये आता है कि यार इतना बड़ा अमाउंट, 3 लाख इज अ गुड अमाउंट, इट्स अ ह्यूज अमाउंट. 3 लाख अमाउंट में इतने कम इंटरेस्ट वाले इंस्ट्रूमेंट में कैसे रख दो. But the thing is, in short run, you don't have to focus upon earning that higher rate of return या beating inflation. Emergency fund is meant for emergency, or emergency is not going to come knocking at your doors. So वहाँ पे वो greed थोड़ी कम करना कि यहाँ पे मेरे को rate of return नहीं करना है. यहाँ पे protection of principal is my primary concern, और liquidity of the principal. कभी भी जरूरत पड़े तो निकाल सको. That is the first thing. उसके बाद health insurance. And again, I can't stress that enough. A lot of India में insurance का penetration बहुत कम है, as far as I know. Very few people have health insurance. So और बीमार तो कोई भी हो सकता है. कोविड के वक्त तो भी हम देख ही चुके हैं, राइट. Anyone could get hospitalized at that time. और आगे भी हो ही सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है. So और हॉस्पिटल के बिल्स आजकल काफी लंबे चौड़े आते हैं, ऐसा नहीं होता. Correct. Just sort of interrupting you here, but health insurance, do you think there is like some people may have their corporate health insurance, right? Like as an employee, do you think some people need to have their own health insurance over and above whatever the corporate is giving, or obviously case to case depend करेगा, but just any idea there? इन जनरल जो कॉर्पोरेट का हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो उसका कवरेज इतना हाई नहीं होता है. पहली बात तो 2 या 3 लाख रुपए का टिपिकली कवरेज होता है फॉर मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज, नॉट टॉकिंग अबाउट वेरी सीनियर एम्प्लॉइज. उसके बाद you don't have a lot of customizations that you can do with that policy. और साथ ही साथ अब जैसे आप जॉब छोड़ोगे, continuing with that insurance is going to be a pain for you. Ideally they're supposed to give you an option to continue with that insurance, but it's going to be a pain to make that switch. So it's always better to have a separate insurance by yourself. In fact, I would say कि अगर आपके पास separate insurance है खुद का, जो आपने काफी research करके अपने requirement समझ के लिया हुआ है, then maybe you can opt out of that corporate insurance and take that extra income and like आपका cash in hand बढ़ा लो by opting out of the insurance. So I would prefer having a personal health insurance जो आप lifelong continue कर सको, instead of a corporate insurance जो आपको बार बार switch करना पड़े. A lot of people, especially the freshers, right, जो नए जॉब मार्केट में आते हैं, उनको तो क्लू ही नहीं होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना भी होता है. सो फॉर दोस पीपल इट्स गुड, एटलीस्ट कुछ तो है, क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं है. बट वंस यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, यू कैन मे बी मेक अ स्विच एंड गिव अप ऑन योर कॉर्पोरेट इंश्योरेंस. खुद का ढंग से इंश्योरेंस ले लो. सो एंड थर्ड थिंग इज लाइफ इंश्योरेंस. आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, या फिर फ्यूचर में आपके पेरेंट्स हो सकते हैं. अगर फ्यूचर में भी कोई डिपेंडेंट होने वाला है तो आपके पास एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए. बाकी अनटाइमली डेथ के केस में, अगर आप किसी भी केस में अनटाइमली डेथ होती है, एक्सीडेंट्स हो सकता है, बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो आपकी फैमिली को एक सफिशिएंट लमसम अमाउंट मिल जाए, जिससे उनकी फाइनेंशियल जो नीड्स है पूरी होती रहे फॉर नेक्स्ट 20-30 जितने भी ईयर्स बाकी है. सो ये 3 तो बेसिक्स होते हैं. इसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्टार्ट होती है. वंस यू आर डन विद दीज 3 थिंग्स, उसके बाद फिर आपके फ्यूचर गोल्स डिफाइन होता है. आपको गाड़ी कब खरीदनी, घर कब खरीदना, वेकेशन कहाँ कहाँ जाना है, कितनी फ्रीक्वेंटली जाना है, बच्चों का एजुकेशन कब करना है,
किस तरह का एजुकेशन करना है, एमबीए करना है, एमएस करना है, इंडिया में करना है, अब्रॉड करना है, उस हिसाब से गोल के अमाउंट वेरी करते हैं। रिटायरमेंट आपको कब लेना है, क्या आर यू गोइंग टू टेक केयर ऑफ ए पेरेंट्स, राइट, तो उसके लिए अब आपको एक बजट साइड में रखना रखना रहता है। या फिर कुछ लोग के इस तरह गोल्स हो सकते हैं कि मुझे फार्म लैंड खरीदनी है, राइट, आई वुड वांट टू डू फार्मिंग आफ्टर अ सर्टेन एज, जस्ट फॉर दी शौक कि Yeah. करेंगे। तो लैंड खरीदने उसके लिए भी वो भी गोल सेट होना चाहिए आपका। अपस्किलिंग एक बजट काफी कम लोग निकालते हैं, बट पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग आउट दैट बजट ऑल्सो, कि 50-60 हजार 70 हजार साल का एक अपस्किलिंग पे भी अगर डाल सके, Okay. कोई भी एक छोटा कोर्स कर लिया मे बी, या जस्ट टू अपस्किल देम। अब आजकल तो इम्पोर्टेंट हो ही गया, राइट, यू हैव टू Yeah. कंटिन्यूअसली अपडेट योर Right. स्किल्स ऑल्सो, सो Yeah. दैट्स लाइक इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, तो वो भी एक बजट आप निकाल सकते हो। सो या सो उसके बाद तो सारा गोल्स पे, बट ऑल ऑफ दिस प्रोवाइडेड दैट योर फर्स्ट ऑफ ऑल योर बेसिक थिंग्स, इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस इज सॉर्टेड, आपके जो करंट खर्चे हैं वो निकल पा रहे हैं सारे। उसके बाद यू स्टार्ट प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर गोल्स। अगर आपके करंट खर्चे इतने हैं कि आपकी इनकम से ज्यादा हो रहे हैं, देन यू वुड फर्स्ट प्रायोरिटाइज अपस्केलिंग योरसेल्फ, या नई जॉब ढूंढने में जहाँ पे आपकी इनकम आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो, या फिर आप एक्सपेंसेस कट डाउन करोगे अगर आपके एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट है, जो अगर उसमें कुछ स्कोप है कट डाउन करने का। सो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग इज एक्चुअली लाइक अ वेरी लास्ट स्टेप इन द फाइनेंशियल प्लानिंग, जब आपका सरप्लस बचने लगता है। सो इट टेक्स टाइम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टू गेट देयर, स्पेशली अर्ली 20s में उस स्टेज पे लोग पहुंच नहीं पाते हैं, बहुत छोटा छोटा सरप्लस बचता है Yeah. लोगों को। Yeah. अर्ली 20s टिल लेट 20s वुड बी अ गुड टाइम टू लर्न अबाउट ऑल द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ज्यादा लूज करोगे नहीं आप, क्योंकि आपका कैपिटल ही छोटा होगा, बट you'll get to learn a lot at that time. Yeah. Mhm. Great. So I think one point you mentioned very early on, I just wanted to just elaborate maybe for the viewers here, was that you mentioned, emergency fund hona chahiye, and it's all about capital protection at that stage. It's not about investing. It's not about sort of getting returns from it. The first question I suppose here is just that you mentioned 50,000 and then you came to the 3 lakh figure, which is essentially on a 6 month horizon. Is there a reason why financial planners look at a 6 month window, or is it just the norm? Like what is the logic there? So logic as such कुछ 6 मंथ का ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। माई लॉजिक इज ऑलवेज कि आपको नई जॉब ढूंढने में कितना टाइम लगेगा, Okay. राइट। सो ये वही, जैसे अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो इट्स वेरी अनलाइकली कि आपकी जॉब एकदम से चली जाएगी। Yeah. तो उस केस में आपका इमरजेंसी फंड रिक्वायरमेंट 1-2 महीने का भी हो सकता है, कि ठीक है 1-2 महीने अगर सैलरी डीले हो गई Yeah. तो क्या करेंगे, 3 महीने सैलरी डील हो गई तो क्या करेंगे, बट जॉब जाना इट्स वेरी अनलाइकली। अगर आप स्टार्टअप में काम कर रहे हो तो इट्स वेरी लाइकली कि आपकी जॉब जा सकती है। Yeah. सो उस केस में मतलब है, मतलब थोड़ा रनवे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, सिमिलर जॉब मिलना आपको 7-8 महीने शायद लग जाए। Got it. और कॉर्पोरेट में अगर हो आप तो स्विच करना, वो साइकिल पे डिपेंड करता है, रिक्रूटमेंट साइकिल सबकी Yeah. जुलाई जो भी होती है, साइकिल साइकिल किस एंड पे आप खड़े हो, Yeah. तो Yeah. इट कैन वेरी। सो माई लॉजिक इज ऑलवेज कि जॉब ढूंढने में कितना टाइम लगेगा, टिपिकली पर 2-3 महीने तो कोई भी नई जॉब ढूंढने में लगता ही है किसी को, कोई भी अगर फायर होता है तो इट टेक्स दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम। Fair enough. No, I think, yeah, I appreciate you sort of giving us that insight here as well. It's always good to sort of get a broader perspective. So, okay, we've broken down some of these components of, personal financial planning में क्या जाता है. And it's obviously, it'll depend from case to case and person to person, depending on their own individual financial goals, etc. But also, there would be certain pitfalls or certain issues, that you may have seen when you come to financial planning, right? Like, if you could elaborate on what are some of the common, let's say, pitfalls when it comes to people trying to come up with their own financial plans, or if they go to a financial planner, what is it that the listeners should avoid when they're sort of trying to come up with their own personal financial planning, essentially? Right. So most of the common pitfalls are behavioral. Okay. बिहेवियरल इश्यूज बहुत ज्यादा, मतलब हमको जिससे परेशानी होती है, जिससे हम सफर करते हैं, मोस्टली बिहेवियरल इश्यूज। Okay. बाकी सब तो सॉर्टेड होता। सो पीपल वुड कम अप विद अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कि आपको 20% रिटर्न मिल जाएगा, 25% मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, मतलब, राइट, Yeah. एंड दैट टू इन शॉर्ट रन, कि आपको 1 साल 2 साल में ऐसा कंसिस्टेंटली 12-15% 18% रिटर्न मिल जाए, ऐसा कुछ बताओ, 20% मिल जाए, ऐसा कुछ बताओ, राइट। एंड व्हेन यू शो द रियलिटी कैसा पॉसिबल नहीं है, व्हेन यू गिव देम द सेम एडवाइस, राइट, सम पीपल आर इन डिनायल, वो उनका ऐसा हो जाएगा कि यार आपको नहीं पता, हम कहीं और से पता करके आते हैं।
So they would continue with their chase of finding a high rate of high return instrument in the for the short run. Yeah. तो ये सबसे बड़ा कॉमन पिटफॉल मैं बोलूंगा, चेजिंग द हायर रेट ऑफ रिटर्न, दैट टू फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स. अब शॉर्ट रन में कुछ भी हो सकता है, राइट. इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, किस साल वो 50% ऊपर हो जाएगी, अगले साल वो 20% नीचे भी हो सकता है. सो दैट्स वाई जनरल एडवाइस यही होता है कि इक्विटी में आप लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करो. इट्स वेरी हार्ड टू टाइम द मार्केट, वेरी वेरी फ्यू पीपल डू दैट वेल, राइट. सो एंड मासेस कैन नॉट इवन टाइम द मार्केट. सब अगर मार्केट को टाइम करने लग जाएंगे तो उसका कुछ रेलेवेंस ही नहीं बचेगा, फिर कुछ आर्बिट्राज बचेगा नहीं. सो दैट्स द मोस्ट कॉमन थिंग. उसके बाद फिर दूसरा ये आता है कि ठीक है, आपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, अब मार्केट ऊपर नीचे होता है, राइट. थियोरेटिकली तो पीपल अंडरस्टैंड कि इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए होती है, 5 साल के लिए 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया है. बिफोर इन्वेस्टिंग ऑल्सो दे वुड नॉट कि हाँ ठीक है फ्लक्चुएशन होंगे, हम झेल लेंगे. बट जब रियलिटी में जो सिचुएशन आती है कि आज पैसा इन्वेस्ट किया 2 महीने और वो 5% नीचे हो गया, लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट पैनिकिंग आफ्टर दैट कि यार पैसा नीचे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, आपने तो बोला था 12% रिटर्न मिलेगा, ये तो -5 हो गया. तो फिर उस वहां पे भी, सो वी एज एन एडवाइजर दैट्स आवर जॉब टू कंट्रोल दोज इमोशंस, टेल देम टू नॉट टेक इट डिसीजन ऑन बेसिस ऑफ दीस काइंड ऑफ फ्लक्चुएशंस. वहां तो हम संभाल लेते हैं, बट a lot of people would take wrong decisions in such cases. कुछ काफी लोग पैसा निकाल लेंगे इस तरह के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन के बेसिस पर भी, एंड दे विल नेवर कम इनटू द मार्केट वंस अगेन आफ्टर दैट. उनको लगा कि यार तो लॉस ही होता है, पैसा बढ़ता ही नहीं है. तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को फिक्स डिपॉजिट की तरह लोग कई बार कंसिडर करते हैं कि एफडी में जैसे हर दिन 5% इंटरेस्ट बोला तो हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ेगा, राइट. उस तरह से यहाँ पे भी 12% बोला है तो हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ना चाहिए, बट वो ऐसा नहीं होगा, वो ऐसा ऐसा होगा. सो ये एक होता है. फिर एक थर्ड चीज ये होती है कि नीचे गया तो पैसा निकाल ले, ऊपर गया तो भी निकाल ले, अब प्रॉफिट बुक कर लेते हैं. अभी 2-3 महीने तो हुए इन्वेस्ट करें, प्रॉफिट बुक करके व्हाट्स योर प्लान, अब क्या करोगे. वो बोलेंगे हम मार्केट गिरने का वेट करेंगे, मार्केट नहीं गिरा तो मतलब हु नोज, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा. when you've committed for a time frame, then stick to that time frame, right. वो fluctuations absorb करने के लिए promise, so absorb those fluctuations. ऊपर जाए नीचे जाए, for most of these fluctuations you don't have to do anything. Of course there can be certain events जहाँ पे आपको एक्शन लेनी पड़ेगी, but those are very rare. मतलब 10 में से एक केस ऐसा आएगा जहाँ पे सही में आपको एक्शन लेनी है, 9 केस में आपको कुछ नहीं करना है when you have committed to a strategy. So mostly behavioral issues ही होते हैं. What I've seen, मैथ्स वैच तो लोग समझ जाते हैं, theoretically सब समझ जाते हैं, और like everyone is intelligent enough to do that, but actually में जब वो सिचुएशन आती है वो लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाते. Yeah, I think probably the hardest thing here is obviously if जब market गिर रहा है and गिरे जा रहा है, in those situations I think dipping and saying okay fine I'm just going to take a loss because गिरा जा रहा है आपका investment, you're not sure कितने टाइम तक आपको इन्वेस्ट रहना है, right. And if you don't have that sort of I suppose financial awareness कि this is my goal and to get to this goal I need to just consistently keep investing regardless of what is happening in the market because there is obviously a broader plan in place. Right. एक चीज होती है कि से अगर आप खुद से अपना स्टॉक का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो तो थोड़ा आपको ज्यादा एक्टिवली मैनेज भी करना पड़ेगा. यू हैव टू टाइम एंड एवरीथिंग, यू हैव टू लाइक इंडिविजुअली आपको स्टॉक के बेसिस पे यू हैव टू रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो. बट व्हेन यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टिंग इन अ मैनेज पोर्टफोलियो, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर एक स्टॉक बास्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, देन यू हैव ऑलरेडी आउटसोर्स दैट जॉब टू एन एक्सपर्ट. तो आप उसमें अपनी और एक्सपर्टीज मत लगाओ, मतलब लेट दैट मैनेजर टेक दैट कॉल कि क्या करना. I think I think maybe just as humans, we all love to sort of put our fingers into things, right? Like we just love to sort of dabble into it कि हमारे पास भी expertise है, so we can try and sort of jump into it. Eco pitfall. So with this, इतना जो content आ गया ना online, so everyone is talking about stock market investing या mutual fund, मतलब 100 तरह के investment options के बारे में 1000 videos बने हुए हैं. And a lot of these like videos are good. ऐसा नहीं कि content अच्छा नहीं है. Individually आप देखोगे उस product को समझने के लिए it's good. आप प्रोडक्ट को समझ सकते हो उस वीडियो को देख के, बट काफी कॉन्टेक्चुअल होते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट में कब इन्वेस्ट करना है. वो कॉल आपकी पर्सनल सिचुएशन पे डिपेंड करेगा. ऐसा नहीं कि किसने फॉर एग्जांपल सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को अच्छा बोल दिया तो आप ऐसा नहीं कि सारा के सारा पैसा एसजीबी में डाल दोगे, या किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को अच्छा बोल दिया तो आप सारा के सारा पैसा उसमें डाल दोगे. बट डिपेंड्स अ लॉट ऑन योर रिस्क टेकिंग एपेटाइट, आपके गोल्स क्या है, आप लाइफ के स्टेज पे हो.
जस्ट बिकॉज द इंस्ट्रूमेंट इज गुड डजंट मीन आप उसमें सारा पैसा डाल दोगे. Correct, correct. I think you're right. The content is obviously very good, whatever is available online, and people are doing a lot of effort into it. But I think people that are investing or are following financial planners need to also take a step back and realize there is a broader goal and perspective, and you need to sort of probably Right. stick to that plan. Great. So I think okay, we've understood some of the mistakes that a lot of people probably make. Let's look at a more positive side, which is the strategy side, right? कि actually कर क्या सकते हैं? So what is it? When it comes to trying to reach our financial goals, what are some strategies, lesser known, more known for success that people can sort of maybe look at? So see, I'll tell you, like my approach, the approach that we follow at Seven Prosper, and people would have different approaches. Like, so I would not say that a single approach is the best one. आप जो भी follow कर सकते हो diligently, that is going to be the best strategy for you. But for me, and the strategy that we recommend to our clients is consistent investment. आप So we mostly deal with salaried people first of all. So उनके लिए एक fixed amount invest करना हर month is not a very difficult task. वो budget fix रहता है कि इतनी income आएगी, इतना expense जाएगा, इतना इतना ad hoc expenses, बाकी इतना पैसा fixed investment हो सकता है. So disciplined investing for a sustained period of time without reacting to your behavioral biases. बीच में ऊपर नीचे होगा without reacting to those. अगर आप 2 साल 3 साल 5 साल इन्वेस्ट करते जाओगे यू वुड स्टार्ट सीइंग दैट चेंज इन योर कॉर्पस, राइट. वो जो आपने 5-6 लाख इन्वेस्ट किया था वो 10-12 पे पहुंच चुका होगा अपने टाइम में. वो सो वो 5-6 साल बाद डिफरेंस दिखना स्टार्ट होता है. 10 साल में और ज्यादा दिखता है. वो कोई कंपाउंडिंग साल और ज्यादा दिखता रहता है. सो माय सिंपल स्ट्रेटजी इज जस्ट बी कंसिस्टेंट विद व्हाटएवर यू आर डूइंग. अगर आप एक सिंपल इंडेक्स फंड अगर आप एक सिंपल इंडेक्स फंड पकड़ के भी बैठे हो ना, उसमें भी आप कंसिस्टेंटली अगर इन्वेस्ट करोगे तो भी आप 12-13% रिटर्न बना जाओगे लॉन्ग रन में, विच इज स्टिल गोइंग टू बी अ लॉट बेटर देन व्हाट यू वुड हैव डन बाय कॉन्स्टेंटली रीबैलेंसिंग योर पोर्टफोलियो एवरी नाउ एंड देन. उसमें आपका लॉस ही होगा मोस्टली, राइट. सो स्ट्रेटेजी मेरे ख्याल से इतना ज्यादा फोकस मैंने नहीं होता कि किस इंस्ट्रूमेंट में आप कर रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो काम है दैट वी हैव डेलीगेटेड टू द फंड मैनेजर. हम म्यूचुअल फंड रेकमेंड कर रहे हैं मोस्टली, या फिर जो भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट. सो वी आर नॉट मैनेजिंग द पोर्टफोलियो एज सच ऑफ स्टॉक्स, दैट इज डेलीगेटेड. उसके बाद आपको अपना बिहेवियर ही रेगुलेट करना है कि आप वेदर यू आर एबल टू स्टिक टू दैट कंसिस्टेंट या डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और नॉट. सो दैट इज द थिंग. सेव कर पाना मतलब ये भी काफी लोगों का वो आज मतलब ये भी काफी लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है कई बार. एकदम कुछ वो होता है ना, इम्पल्सिव परचेसेस हो जाएंगे जिसका पूरा बजट डिस्टर्ब हो जाता है. तो नॉट डूइंग दोज काइंड ऑफ थिंग्स. अदरवाइज आपका इन्वेस्टमेंट अगर 3-4 महीने के लिए भी मिस होगा तो फिर आप दैट्स गोइंग टू अफेक्ट योर पोर्टफोलियो इन द फ्यूचर. सो माय सिंपल स्ट्रेटेजी इज डिसिप्लिन. आप डिसिप्लिन रहो. कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई मैजिक बुलेट नहीं. लॉन्ग टर्म में आपको डिफरेंस दिखेगा उसका. Got it. No, I think that also makes a lot of sense. Staying invested for the long term, depending on whatever is the financial goal. So you touched on this, I think, towards the end, the budgeting, right? Like it is obviously very important. It's considered typically, it's like the backbone of financial planning in a way, right? So, and it can obviously, to a degree, it can also be a game changer when it comes to your own personal finance and sort of trying to achieve your goals. Maybe you can, if it's possible, we can just sort of jump into the psychological aspects of budgeting and maybe how our listeners and our viewers can leverage them for success. ठीक है. So as far as budgeting is concerned, right? So I don't micromanage my budget. So एक personally बहुत high level budget बनाने में believe करता हूँ. So that is divided into income. Income में से आप कुछ expense होंगे जो उस month के लिए लगेंगे. And third bucket is आपके investment जो future के लिए हो रहा है. So और जो आपका चौथा एक टैक्स, वो तो पहले आपको कट चुका होता है. तो once you receive your income, the best thing that you can do is जो भी आपका इन्वेस्टमेंट बकेट का जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो बजटेड पैसा था, let that get invested as soon as you get your salary. या सैलरी के मिलने के 4-5 दिन में आप उसको इन्वेस्ट कर दो. उससे क्या होता है कि मेंटली ऑल्सो यू आर एट पीस कि इन्वेस्टमेंट तो हो चुका है मेरा, राइट. इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग एट द एंड ऑफ द मंथ कि जो पैसा बचेगा हम देखेंगे, जो बचेगा उसको इन्वेस्ट करेंगे, वो फिर ऐसे बचने नहीं वाला. यू एंड अप स्पेंडिंग दैट मनी. आपके अकाउंट में पड़ा होता है. कई लोगों की हैबिट बहुत खराब होती है एज फार व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग. दे डोंट कीप अ ट्रैक कि अकाउंट में कितना पैसा है, तो कहीं भी पैसा
खर्च हो जाएगा, वीकेंड में पार्टी कर लिया, ज्यादा कर ली, कुछ इम्पल्सिव परचेस कर ली, कुछ नया गैजेट आया, भले ही नीड नहीं थी बट खरीद लिया। ऐसे चलते चलते मंथ के में पैसा बचता ही नहीं है। तो कुछ इन्वेस्टमेंट का स्कोप ही नहीं बचा। सो वंस यू डू योर इन्वेस्टमेंट्स बिफोर स्पेंडिंग योर मनी, आपका जो पैसा स्पेंड करने के लिए बचता है, उस स्पेंडिंग में कुछ आपकी नेसेसिटीज होगी। आपको पता होगा घर का खर्चा मेरा 20,000, 30,000, 50,000, 60,000 महीने का है, राइट? तो वो तो आप खर्च करोगे, वो तो नेसेसिटीज है। उसके बाद जो आपका पैसा बचता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 1 लाख की इनकम की हम बात करते हैं, अगर 1 लाख की इनकम पे कोई अगर 1 लाख इन हैंड इनकम की बात कर रहा हूँ, हम्म। उसमें से किसने डिसाइड कर लिया बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल प्लान या फ्यूचर गोल्स कि 40,000 तो मेरा मंथ का इन्वेस्ट ही होगा। तो जैसे इनकम आई 40,000 गॉन इनटू एसआईपीज या जो भी इन्वेस्टमेंट करे हुए थे, इन्वेस्ट हो गया वो। एंड नाउ फ्यूचर के लेके आप सिक्योर्ड हो, मेंटली भी और सिक्योर्ड कि फ्यूचर के लिए तो मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ। अब जो 60,000 बचा उसमें से यू नो कि 40,000 इसमें से मेरा घर के खर्चे चलाने में जाएगा, मेरा रेंट प्लस मेरा जो खाना पीना एकदम जो बेसिक खर्चे होते हैं। उसके बाद जो 20,000 बचा है मेरे पास, दैट इज माई लीजर मनी। इसको मैं कहीं भी खर्च कर सकता हूँ। उसमें आप एक रैंडमनेस भी डाल सकते हो कि पार्टी कर लेंगे, कि छोटी शॉर्ट वेकेशन कर लेंगे, वीकेंड गेट अवे कर लेंगे। यू कैन सरप्राइज योरसेल्फ विद दैट मनी। उसमें फिर आप गिल्ट गिल्ट लेने की भी जरूरत नहीं, बिकॉज यू हैड Yeah. बजटेड दैट लीजर एक्सपेंस Mhm. ऑल्सो। Yeah. सो जब आप कोई अपने लीजर एक्सपेंस कोई बजट करोगे, यू विल बी गिल्ट फ्री, यू विल स्पेंड दैट मनी ऑल्सो गिल्ट फ्री। Got it. No, I think it's important to have these sort of, you're right, like guilt buckets, let's call it, or guilt-free spending. Because अगर वो नहीं रखोगे तो एकदम मतलब it'll become so dry and boring that you'll never be able to maybe stick to it from a longer term perspective, right? बाकी मैं मतलब हर ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना या बजटिंग जो एप्स होती है उसको यूज करना, आई डोंट लाइक इट ऑल, आई डोंट लाइक दैट एट ऑल। कि 100-100 रुपये, 50-50 रुपये, 10-10 रुपये एक एक चीज का अकाउंट करो, फिर देखो इतना परसेंट इधर गया, उतना परसेंट उधर गया। मतलब फिर लाइफ का कुछ मजा नहीं बचता है। Correct. You So, can't मतलब हर एक चीज को micro manage करोगे तो but it's also very difficult मतलब ठीक है, you have all these apps but at the end of the day trying to make sense of it also becomes a little tough. सो आई Got it. बिलीव इन मैक्रो बजटिंग। मैक्रो आप करो, उसके बाद Uh, खुश रहो फिर। got it. Maybe at a high level, yes, essentially the point is that at a high level we should do follow the broad राइट। rules that are in place. At a micro level, you don't need to sort of worry about it too much. मतलब आप माइक्रो मैनेज करके हो सकता है 500 रुपये ज्यादा बचा लोगे महीने के, बट माइक्रो मैनेज के चक्कर में ये नहीं होना चाहिए कि आपने 10,000 जो एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर सकते थे वो नहीं करा आपने। Correct, correct, correct. वही पेनी वाज पाउंड फुलिश वाला जो Yeah, रूल yeah, होता है yeah. ना, वो हर जगह अप्लाई होता है। Correct, correct. तो मे बी मतलब आई वुड प्रेफर बीइंग पेनी फुलिश, बट आई वुड प्रेफर बीइंग पाउंड वाइज। Yeah, yeah. That's a very good good line actually. Yeah, great analogy there. Okay, so I think we've understood, what is the sort of psychology that goes behind budgeting and the type of mindset that maybe we should have towards budgeting and how that can help us achieve the sort of financial success that we all राइट। want in life. And earlier also, I think you mentioned about behavior, right? So I really want to sort of jump into it a little bit more with you. Let's say the role of discipline in trying to reach your financial goals is obviously very important, right? So how do you sort of develop that consistent financial behavior that can contribute to achieving the goals that you want for yourself? And what are some of the tips maybe you can share to maintain that discipline for some of our viewers? सो फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, जो डिसिप्लिन वाली अप्रोच आती है, राइट, इट्स देयर फ्रॉम लाइक विद इन कि हम डिसिप्लिन रहेंगे। दे वुड हैव सीन देयर पेरेंट्स डूइंग दी सेम थिंग कि हर महीने एक फिक्स अमाउंट सेव होता है, वो या तो एफडी में जाता था, आरडी में जाता था। सो नाउ दे आर डूइंग द सेम थिंग। वो हैबिट कुछ लोगों को अंदर से आ जाती है, बट जहाँ नहीं आती है, जहाँ लोग ये जो बिहेवियर इश्यूज आते हैं, राइट, द थिंग्स आई वाज टॉकिंग अबाउट, मार्केट फ्लक्चुएशंस पे रिएक्ट करना, you can overcome that by putting some efforts and seeing the past data। अब जब आप डेटा देखोगे, अब थोड़ा देखोगे किस तरह से ये फ्लक्चुएशंस काम करते हैं, क्योंकि अब खुद के एक्सपीरियंस से ये बहुत लेट सीखोगे। खुद के एक्सपीरियंस सीखने के लिए आपको 10 साल इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, उसके बाद आप समझ जाओगे। Yeah. बट उतना टाइम आप पेशेंट नहीं रह पाओगे। अगर आप पेशेंट नहीं रहोगे तो आप डिसिप्लिन में नहीं रह पाओगे। एवरी मार्केट फ्लक्चुएशन पे यू वुड वांट टू मे बी टेक आउट द मनी या फिर इन्वेस्ट मोर, या कुछ ना कुछ आप छेड़खानी करना चाहोगे उससे। सो इन ऑर्डर टू नॉट डू दैट, थोड़ा टाइम निकालो, थोड़ी रील्स कम देख लो, बट मे बी वॉच अ लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब वीडियो जिसमें किसने पास का ढंग से एनालिसिस दिखाया होगा। इनफैक्ट मैंने भी अपने काफी यूट्यूब वीडियोस में म्यूचुअल फंड का हिस्टोरिकल एनालिसिस दिखा हुआ है कि 3 ईयर पीरियड में कैसे फ्लक्चुएशन होते हैं, 5 ईयर पीरियड में कैसे फ्लक्चुएशन होता है, 10 ईयर पीरियड में किस तरह से होता है।
सो विल गेट दैट कॉन्फिडेंस। जब आप देखोगे ना कि ये फ्लक्चुएशंस बहुत बहुत नॉर्मल है शॉर्ट पीरियड में, तो फर्स्ट टाइम जब आप देखोगे तो आपको खुद को अंदर से वो अश्योरेंस आने लगेगा। एज एन एडवाइजर ऑल्सो वी गिव दिस अश्योरेंस एवरी नाउ एंड देन टू आवर क्लाइंट्स। मतलब एवरी मार्केट मूवमेंट वी गेट क्वेरीज कि आप क्या करें, प्रॉफिट बुक कर लेके आप पैसा निकाल लेके, तो मार्केट नीचे चला गया, मार्केट ऊपर चला गया, आप क्या करें। सो एज एन एडवाइजर वी गिव अश्योरेंस फॉर दैट। मतलब सो हम फीस चार्ज कर रहे हैं उस चीज के लिए, वो अश्योरेंस देने के लिए। बट इफ यू आर नॉट हैविंग एन एडवाइजर, मतलब यू नीड टू गिव दैट अश्योरेंस टू योरसेल्फ टू नॉट रिएक्ट टू दीज थिंग्स। और डेटा तो फ्रीली अवेलेबल है, ऐसा तो है नहीं कि डेटा नहीं है, पूरा एक्सेसिबल है, आप कुछ भी एनालिसिस कर सकते हो, अच्छे अच्छे वीडियोस भी है, डिटेल्ड वीडियोस मिलेंगे इन सब पे। सो यू नीड दैट अश्योरेंस एंड दैट विल कम विद द, या तो एक्सपीरियंस के साथ आएगा या पास डेटा के साथ आप सीख लो, पास डेटा के साथ सीख लो, क्योंकि एक्सपीरियंस लेने में बहुत टाइम लगेगा। Got it. No, I think you're right. There's a lot of, obviously, you can either, take that plunge and commit to the market and try and learn from your mistakes, which everyone will make ultimately at the end of the day, right? Or you can say, okay, fine, maybe I can put some analysis and effort towards it, or I can give my money to a mutual fund or, small Correct. case or whatever it is, right? Makes sense. I think the key point here is obviously that there is the consistency and the discipline needs to be there, because if it's not there, then that sort of success that you're looking for from a financial goal perspective maybe becoming harder to sort of achieve, I suppose, right? Yeah. Great. So I think this is probably a good segue into trying to understand if you could share some more examples or some more experiences of your own based on whatever you've seen, right? So maybe if we can jump into like a challenging financial situation that you may have seen with some of your clients, and we don't have to sort of get into specifics, but at least at a higher level, right? And maybe how you strategize with them and what was the plan to sort of overcome that challenging financial situation. Right. So actually, we have seen a lot of interesting cases also. Typically, for example, say there have been quite a few clients who are earning like a good amount of money, 2 to 3 lakh per month, which is a good amount of money in India, right? And they're in their around their 30s, somewhere around that age. Now, if you think about it, 2 to 3 lakh or even 2 lakh per month should be a good amount of money for anyone to survive, like have a very decent lifestyle, even in a metro city in India. Absolutely, yeah. But these people were kind of living a very urban poor kind of a life, where, and that was because they had a lot of loans. People end up taking a lot of loans as soon as they start earning. Especially late 20s or early 30s में अगर आप घर खरीदते हो, a lot of people have this pressure of buying a house as soon as they get a, जैसे उनका स्टेबल करियर बनता है या कोई अच्छी जॉब लग जाती है, घर से प्रेशर आता है, या मे बी देयर इंटरनल जो भी बिटवीन दी स्पाउसेस जो भी डिस्कशन चल रहे हैं उससे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जो पीयर प्रेशर भी होता है कि आसपास सब घर ले तो हम घर ले लेते हैं, ईएमआई तो हम अफोर्ड कर ही सकते हैं, राइट? तो बैंक वाले तो आपके पीछे पड़ ही जाता है। अगर आपका कोई एमएनसी में जॉब है, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख महीने कमा रहे हो, वो तो आपको 1 लाख पर मंथ ईएमआई का लोन दे देंगे आपको आसानी से। बट दैट 1 लाख पर मंथ, पेइंग दैट 1 लाख पर मंथ ईएमआई इज नॉट रियली सस्टेनेबल फॉर यू। आपके फाइनेंसेस बहुत गंदी तरह से अफेक्ट हो जाते हैं उसके कारण, क्योंकि आप 2 लाख कमा रहे हो, उसमें से आधी आधी या 30-40% इनकम आपकी ईएमआईज में चले गई, राइट? आपके मेट्रो में एक्सपेंसेस 40-50,000 रुपीज पर मंथ, या 50-60 तो आपके लिविंग एक्सपेंसेस होंगे, 30-40 आपका रेंट होगा, उसके बाद खाने पीने के खर्चे, ऑलमोस्ट 1.5-1.6 लाख रुपीज आपका चला ही गया, मतलब इतनी हाई इनकम कमाने के बाद, right? उसके बाद फिर और छोटे छोटे लोन, सकते कार का लोन भी होगा आपके पास, कार भी आपने कोई अच्छी 10-15-20 लाख की कार ले चुके होंगे आप, उसकी ईएमआई 20,000 रुपये आ रही होगी महीने की, सो 1.8 यहाँ तक पहुंच गया। तो ऐसे करते करते इवन आफ्टर अर्निंग 2 लाख रुपीज पर मंथ यू आर नॉट लेफ्ट विद एनीथिंग। सो इट्स अ वेरी मेजर ब्लंडर जब आप होम लोन बहुत अर्ली इन लाइफ ले लेते हो, क्योंकि ईएमआई आपकी इनकम के एज कम्पेयर टू इनकम इज रियली रियली हाई। जस्ट बिकॉज आपकी इनकम बड़ी इसका मतलब ये नहीं कि आप होम लोन अफोर्ड कर सकते हो। सो अब यहाँ से इट्स अ स्पाइरल, मतलब डाउनवर्ड स्पाइरल चालू हो जाती है, मतलब या फिर शुरू के 4-5 साल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं until you increase your income. So we can't really do much about much we can't really do much about this right away. तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी ये होती है कि पहले तो आप लोन्स लेना बंद करो, ठीक है? एक्सपेंसेस जो भी आप कट डाउन कर सकते हो वो कट डाउन करो, जो भी थोड़े डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस होते हैं उसमें थोड़ा 5,000 10,000 महीना जो भी थोड़ा बहुत कट डाउन हो सकता है, पहले तो बजट में से जो भी स्क्वीज आउट हम कर सकते हैं वो करेंगे। ईएमआई इज पॉसिबल,
केस टू केस वेरी करेगा। हम ईएमआई कम कर सकते हैं वैसे, बट लोन का टेनर बढ़ जाएगा, उससे ओवरऑल आपका इंटरेस्ट पेमेंट ओवर द पीरियड ऑफ योर लोन टेनर वो बढ़ जाएगा। बट कई केसेस में अगर आप बहुत ज्यादा आपका नुकसान हो रहा है, आपके सर्वाइवल के एक्सपेंस भी ढंग से नहीं निकल पा रहे, देन वी वुड गो विद दैट ऑप्शन ऑल्सो, आपकी हम होम लोन की ईएमआई थोड़ी कम करवा देंगे, टेन्योर बढ़वा देंगे, इफ दैट्स एन ऑप्शन फॉर अस। बट विल प्लान की उसको हम मे बी 4-5 साल बाद अगेन उसको हम वापस से बढ़ा देंगे टू कवर फॉर दी जो 4-5 साल हमने रिड्यूस्ड ईएमआई दी थी, सो दैट आपके हाथ में आज कुछ पैसा बचे। क्योंकि इसका एक दूसरा साइड इफेक्ट ये होता है कि जब इतना कमाने के बाद भी किसी का उससे पैसा बचता नहीं है ना, दोस पीपल ऑल्सो स्टार्ट लूजिंग द कॉन्फिडेंस कि यार मैं इतना कमा रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मेरे हाथ में कुछ बच ही नहीं रहा है। सो मेंटली ऑल्सो दैट्स वेरी चैलेंजिंग। सो इवन टू गिव दैट कॉन्फिडेंस कि यार आप 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए कमा रहे हो, उसके बाद आपके हाथ में कुछ तो बचे कि आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो, या कुछ थोड़ी जो ख्वाहिशें होती है शॉर्ट टर्म में भी, कुछ छोटी वेकेशन हो गई, ये सब कंफर्टेबली यू शुड बी एबल टू फुलफिल दीज थिंग्स एट दैट लेवल ऑफ इनकम। सो थोड़ा सा मे बी विल कॉम्प्रोमाइज ऑन द लोन, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे ताकि आप करंट में आपका बजट बढ़े, इन्वेस्टमेंट आप कर सकें। बट अगेन दैट्स गोइंग टू वेरी फ्रॉम केस टू केस, क्योंकि उसका दूसरा साइड इफेक्ट भी है, आपका इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ जाएगा। फिर a lot of people end up spending more than what they earn. So कुछ भी खरीद लिया, मतलब बेहिसाब खर्चे, वेकेशन हो गई, कुछ भी कलेक्टिबल्स ही खरीद लिए, जरूरत नहीं थी, बुलेट खरीद ली 3 लाख की, या फिर और कोई सुपर बाइक खरीद ली, स्पोर्ट्स बाइक खरीद ली, राइट। या कार तो आजकल इतनी आ गई है, एसयूवीज, मतलब आप जो स्टार्ट अच्छी एसयूवी 20-25 लाख की कार लेना, मतलब काफी लोग उठा लेते हैं जबकि इतनी इनकम होती नहीं है, यू कांट रियली अफोर्ड दैट कार। और कार लेना सिर्फ कार लेना नहीं होता, उसके साथ फ्यूल एक्सपेंस भी प्रोपोर्शनेटली आता है आपके पास। सो इवन मेंटेनिंग दैट कार इज अ लाइक ह्यूज एक्सपेंस। सो इनकम के डिस्प्रोपोर्शनेट खर्चे करना, छोटे छोटे लोन ले लेना, फिर उन लोन्स को पूरा करने के लिए और छोटे पर्सनल लोन ले लेना। सो वी हैव डेल्ट विद केसेस वेयर पीपल हैड लाइक अ चेन ऑफ लोन्स, 3-4 लोन, एक लोन को पूरा करने के लिए दूसरा लोन, दूसरा लोन को पूरा करने के लिए तीसरा, तीसरे को चौथा, और जो आखिरी लोन होता है उसका इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा होता है। जैसे होम लोन सबसे सस्ते होते हैं, पर्सनल लोन आप जहाँ लेने जाओगे वो 15-20-25% का कुछ भी हो सकता है वो। तो उसमें स्ट्रैटेजी पहले होती है कि पहले विल स्टार्ट सेविंग, जहां से भी बजट स्क्वीज हो सकता है वहां से, एंड विल स्टार्ट क्लोजिंग आउट द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट लोन्स फर्स्ट। तो इस प्रोसेस में लगता है 1-2 साल 3 साल, मतलब लाइन टू लाइन वेरी कर सकता है कौन कितने गड्ढे में। बट अगेन इसमें कोई मैजिक बुलेट नहीं होती है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि 6 महीने में बाहर निकल जाओगे इस सिचुएशन से। इट्स गोइंग टू टेक टाइम, आपको लोन्स थोड़े क्लियर करने पड़ेंगे अब, या फिर विद इन आपकी एक्सेप्टेबल लिमिट्स में लाना पड़ेगा। सो दैट टेक्स बिट अमाउंट ऑफ आर टाइम। यहाँ पे भी एक लोगों की वियर्ड एक्सपेक्टेशन ये आती है कि यार हमने 20% पे लोन ले रखा है, ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ से 20% से ज्यादा रिटर्न मिल जाए तो लोन हमारा खत्म हो जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। द बेस्ट We ऑप्शन क्लियर we दैट all लोन। want that magic doubling sort of return, sort of wishes and all our issues sort of get resolved, but that obviously is never going to happen. In terms of people that might be worried about their own financial planning and how to sort of jump into that journey, right? Like it can be a very daunting process. Budgeting करना है, goals बनाने हैं, उसको कैसे discipline कैसे रखना है. There's a lot of things that people might be worried about, right? So what advice do you have for individuals who might be very overwhelmed with this entire financial planning process, and then how can we sort of simplify it for them? So I would say कि keep it simple to start with. Early in the career, you will not be able to hire a financial planner या फिर advisor, and that's going to be costly for you, right? सेंस भी नहीं बनाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट बजट काफी कम होगा, 5,000 10,000 15,000 20,000 पर मंथ होगा, उसमें the fees would not justify the kind of money that you're investing. So you can keep it simple. जो भी आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 5 साल 7 साल बाद के लिए, यू कैन स्टिक टू इंडेक्स फंड इटसेल्फ, मतलब कोई बुराई नहीं है उसमें, जस्ट कीप इट सिंपल। सो टिपिकली हम जो एलोकेशन करते हैं दैट इज बिटवीन डेट एंड इक्विटी। किसी भी गोल के लिए द हाईएस्ट लेवल ऑफ एलोकेशन इज बिटवीन डेट इक्विटी एंड समटाइम्स बिट ऑफ गोल्ड। इक्विटी में मल्टीपल टाइप्स ऑफ इक्विटी आ जाती है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, ये वो, राइट। डेट में फिर अलग अलग तरह के वेरिएंट्स आ जाते हैं, लो ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन। सो
इक्विटी में कुड जस्ट स्टिक विथ लार्ज कैप इटसेल्फ। मे बी जो आपने डिसाइड किया कि मैं 20,000 रुपये महीने का इन्वेस्ट करने वाला हूँ, उसमें से 10,000 रुपये तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए करूंगा, भूल जाऊंगा उसको। तो 10 में से मे बी यू कुड इन्वेस्ट 7-8 thousand जस्ट इन अ सिंपल इंडेक्स फंड विच इज ट्रैकिंग सेंसेक्स निफ्टी। उसके बाद जो आपका 2-3 हज़ार रुपये महीना बच रहा है, कंसिडर दैट मनी फॉर योर लर्निंग पर्पज। आपको अगर डायरेक्ट स्टॉक्स में करना हो, आपको स्टॉक बास्केट्स में करना हो, आपको मिड कैप स्मॉल कैप के साथ खेलना हो, अगर यू कैन put small like you can start small SIPs with in those kind of funds also, just to see उनके fluctuations। वहां पे फिर आप नंबर्स पे फोकस करो, परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न किस हिसाब से वेरी कर रहा है, नॉट ऑन द अमाउंट दैट यू आर मेकिंग। एंड जस्ट अंडरस्टैंड, लाइक जस्ट नो दैट कि ये मनी मेरा लर्निंग के लिए है, ताकि जब मैं एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना स्टार्ट करूंगा इन माई लेट 20s, आई वुड नो कि स्मॉल कैप कैसे बिहेव करता है, मिड कैप कैसे बिहेव करता है, लार्ज कैप कैसे बिहेव करता है। एंड जो शॉर्ट टर्म का पैसा है आपका, जो मे बी अनदर 10,000 दैट यू आर प्लानिंग टू पुट फॉर योर शॉर्ट टर्म नीड्स, आपकी शादी के लिए हो सकता है, बाइक खरीदने के लिए हो सकता है, कुछ एजुकेशन सर्टिफिकेशन किसी के लिए भी हो सकता है, राइट? You could keep that money safe in fixed deposits also. Like I would not even advise against fixed deposits for your short term needs. Fixed deposit या recurring deposit, शॉर्ट टर्म डेट म्यूचुअल फंड्स में भी आप डाल सकते हो, बट रेट ऑफ रिटर्न कुछ खास वेरी करने वाला नहीं है उसमें। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स का सेम ही रेट ऑफ रिटर्न। हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स आ गए आजकल शॉर्ट टर्म के, P2P लेंडिंग टाइप के, उसमें आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट फिर वहां पर रिस्क है, मतलब यू हैव टू नो दैट रिस्क। अगर डिफॉल्ट होता है तो आपका प्रिंसिपल भी जाएगा। So if you're willing to lose that money in the short run for higher rate of return, you could go with that. बट होता है कि छोटे अमाउंट पे आपको 1-2% का रेट ऑफ रिटर्न एब्सोल्यूट टर्म्स में इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है। अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 7% पे 700 रुपये साल के मिलेंगे, 8% पे 800 मिल जाएंगे, 9% में 900 मिल जाएंगे। तो हार्डली इट्स क्रिएटिंग अ डिफरेंस ऑफ 200 रुपीज फॉर यू फ्रॉम 7 to 9। बट वो 2% का डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क। 200 रुपये का डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क। सो शॉर्ट रन में स्मॉल अमाउंट के साथ डेल्टा उतना क्रिएट नहीं होता है आपके हायर रेट ऑफ रिटर्न से। लॉन्ग रन में डेफिनेटली 0.5%, 1% से भी डेल्टा काफी ज्यादा हो जाता है। So I think सिंपल, मतलब सेफ डेट पकड़ो। डेट की जो भी बेस्ट कैटेगरी है, आपके फिक्स डिपॉजिट्स हो सकते हैं, लिक्विड फंड्स हो सकते हैं, एंड फॉर इक्विटी स्टिक टू इंडेक्स फंड। स्टार्ट सिंपल एंड लर्न विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, दैट्स व्हाट आई वुड से। करेक्ट। So I think वही है कि मतलब सीख लो पहले, dabble a little bit with index funds or whatever, small cap, mid cap, etc., whatever you think is appropriate for your financial goal or your risk profile. And then once you've sort of got that, then with confidence and with a little bit more capital base as you grow older, you sort of can invest through it. And I think the important point here is to remember that it's obviously not a race, right? Like you have this massive marathon you're running at the end of the day, where you have to just stick to it, and every day little bit you have to keep investing and sort of growing yourself, I suppose. Okay, so I think given we've sort of dabbled into equity, mutual fund, debt, and sort of gold, etc., but given that you have so many different types of financial products that are there today, it becomes very confusing, not just for beginners but even for experts, कि यार किसमें invest करना चाहिए, how do you sort of evaluate this specific financial product, and is it fit for my specific portfolio itself as well, right? तो इसमें थोड़ा insight, like what is your thought process here, would love to sort of get that. So when we are recommending any kind of financial instrument to our clients, या client भी हमारे पास कोई भी नया इंस्ट्रूमेंट लेके आता है, right? So I have a framework internally to analyze any kind of financial instrument. So there are 3 things that I look for: risk, कि रिस्क किस तरह से रिस्क हो सकती है, पैसा किस तरह से लूज हो सकता है इस इंस्ट्रूमेंट में, राइट? रिटर्न कितना मिल रहा है और टेकिंग दैट रिस्क। थर्ड इज लिक्विडिटी, कैसे आप विड्रॉ कर सकते हो पैसा। तो इन 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे यू कैन एनालाइज एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एटलीस्ट आई कैन, लाइक दीज आर 3 मेजर फैक्टर्स दैट आई लुक फॉर इन एनी इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें द मेजर फोकस इज ऑलवेज ऑन रिस्क, फिर रिटर्न तो सब ज्यादा प्रॉमिस करता है। कोई भी नया, स्पेशली कोई नया इंस्ट्रूमेंट आता है, वो 15-20% से नीचे बात ही नहीं करता है। अभी तो काफी आ गया, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर दो, इसमें मतलब इन अ वे यू आर इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस। आप यू आर बाइंग सम फार्म लैंड टू दैट, या फिर कोई कॉफी लैंड बाय कर रहे हो आप, उसमें आप जो बिजनेस चलेगा उसमें से आपको रिटर्न मिलेगा। सो ऑल these are the kind of financial instrument these are the kind of financial instruments which are like a lot of people are thinking about to invest their money in. यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे लगता है रिस्क का हमेशा आता है, रिस्क और लिक्विडिटी दो हमेशा यहाँ पे बात जाके अटक जाती है।
रिस्क के रिगार्डिंग फर्स्ट आई वुड रीड देयर वाइट पेपर्स, जो वेबसाइट पे या जो मैंने डॉक्यूमेंट भेजा है, कितने प्रिसाइजली उन्होंने वो रिस्क एक्सप्लेन कर रखी है. सो बाय रीडिंग दैट लैंग्वेज ऑल्सो यू कैन फिगर आउट कि एक छुपाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं, वर्ड प्ले कितना चल रहा है. सो जहाँ भी रिस्क ढंग से बता, जिसको रिस्क अपनी ढंग से डिस्क्लोज करनी होती है, दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट इट, दे वुड एक्सप्लेन इट वेरी प्रॉपर्ली. लाइक वंस आई वाज एनालाइजिंग स्मॉल केस इटसेल्फ, स्मॉल केस एज अ कंपनी, तो आई रेड द एंटायर रिस्क वाला सेक्शन की रिस्क कितने अच्छे से डिस्क्लोज कर रखी है. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतने अच्छे से डिस्क्लोज कर रखा होगा, सो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड बाय द रिस्क डिस्क्लोजर्स ऑफ स्मॉल केस एज अ कंपनी की किस तरह से रिस्क पूरी मैनेज होती है. सो आई लाइक दैट एक्चुअली. बट कई सारे इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं मार्केट में, ये इनडायरेक्टली यू आर इन्वेस्टिंग इन फार्म लैंड या फिर कॉफी लैंड या कुछ भी तरह तरह के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गए, इनवॉइस डिस्काउंट हो गए, कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं. दे आर जस्ट डाउन प्लेइंग द रिस्क. कि ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इनवॉइस डिस्काउंटिंग, उसमें रिस्क क्या है? आपने किसी का इनवॉइस परचेज कर लिया है, अब जिससे जिससे आपको इनवॉइस क्लेम करना है, दैट पर्सन कैन डिफॉल्ट. सो दे वुड डाउन प्ले इट कि हाँ ठीक है, ये छोटे रिस्क, इट्स अ वेरी स्मॉल रिस्क, वो डिफॉल्ट कर सकता है. बट कौन ही डिफॉल्ट करता है? ऐसा थोड़ी होता है. डिफॉल्ट कर ही सकता है बिजनेस के साथ आप रिस्क ले रहे हो, मतलब क्लाइंट कोई भी डिफॉल्ट कर सकता है. इट्स अ वेरी मेजर रिस्क, राइट? इवन इन पी टू पी लेंडिंग, जैसे क्रेडमेंट हो गया या फिर लिक्विड लोन्स या जितने भी पी टू पी लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, they have given this strategy clearly कि they are distributing your money across for credit. Like last when I read, credit are disbursing your money to 200 different people. That's how they are diversifying the risk. But I've also invested in Credment, for instance, a bit amount of my money. But what I've not seen so far is अगर कोई भी डिफॉल्ट करता है या अगर मेजर चंक ऑफ उनका कंज्यूमर डिफॉल्ट करता है, सो हाउ डू दे हैंडल दैट डिफॉल्ट? क्योंकि म्यूचुअल फंड के केस में क्या होता है, इट्स अ वेरी हाईली रेगुलेटेड बिजनेस. जैसे फ्रैंकलिन का जो पूरा केस हुआ था, पीपल हैव एक्चुअली गॉट देयर मनी बैक नाउ. 2-3 साल 3 साल लगे, बट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इतना स्ट्रांग है कि पीपल कुड गेट देयर मनी बैक. बट अभी जो इतने न्यू एज इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, इतने टाइटली रेगुलेटेड नहीं है. और another complaint that I have with all these new age tech startups is support काफी खराब होता है सबका. You can't get to a person, you can't like talk to a person directly. Especially when you're investing your money through them, you should be able to talk to a person directly. So मुझे ये कॉन्फिडेंस थोड़ा यहाँ गिर जाता है कि अगर कुछ हुआ, कुछ पैसा लूज हुआ, किसने डिफॉल्ट किया, सो विल आई बी एबल टू टॉक टू अ पर्सन कि क्या चल रहा है, मतलब क्या क्या टाइमलाइन है, कब पैसा वापस आएगा. सो थियोरेटिकली दे हैव डिफाइंड कि व्हाट दे आर गोइंग टू डू. But practically, when that actually happens, that's when we are going to see how these companies are actually like managing that risk. When that event actually happens, how do they manage that? म्यूचुअल फंड के केस में लास्ट 2-3 साल में हम 2-3 बार देख चुके हैं. डेट फंड्स जो हमेशा अज्यूम थे कि सेफ होते हैं, दे वर नॉट सेफ. पीपल लॉस्ट देयर मनी इन डेट फंड्स, बट दैट वाज प्रीटी वेल मैनेज्ड विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. बट जितने भी नए इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं उसमें I'm not sure how exactly these companies are going to manage that, because all these companies are startups. और even I'm running a startup, so I know कि कितना difficult होता है इतना compliance, इतना सारा कुछ सब कुछ follow करना. So that there can be issues. So risk is always something जहाँ पे हमने अपने customers को भी रोका है, खुद को भी रोका है, because I was not confident about their risk mitigating strategies. So that's what I would say कि आप भी कुछ consider कर रहे हो, उनका risk disclosures ढंग से पढ़ो. If you're not getting clarity, that means they're trying to hide something. I think that's great advice. I think the ability to sort of a lot of these financial products will have their own risk disclosures available. You'll find it on different websites, right? I think if you're able to, even if you're not a financially savvy person, even if you don't have that financial knowledge, you should still be able to a degree understand some of the what is happening in this product. And if you're not able to grasp that then probably it means that either you find an expert who knows about that product or can identify the risk that is really involved, or it's probably not something that you're suited for in all likelihood. और एक और सिंपल सी चीज आप हमेशा याद रख सकते हो कि गारंटीड रिटर्न कुछ नहीं होता है अनलेस इट्स एन इंस्ट्रूमेंट बैक्ड बाय द गवर्नमेंट. और कोई गारंटी दे ही नहीं सकता है आपको. करेक्ट. तो कुछ ना कुछ रिस्क तो है. सो पीपल वुड यूज डिफरेंट टर्म्स, अश्योर्ड रिटर्न, फिक्स्ड रिटर्न. कुछ नहीं है, मतलब अनलेस गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है, गवर्नमेंट आपको गारंटी दे रही है, उसके अलावा गवर्नमेंट के अलावा आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता है. सो
15% 20% आपको कुछ कोई बोल रहा है गारंटी के साथ, तो समथिंग इज रियली फिशी. यू नीड टू लुक इनटू द डिटेल्स डेफिनेटली. Yeah, absolutely. And I think it probably goes back to that early point that you made very early on कि मतलब लोगों का expectation है कि 15-20-30% तक रिटर्न आना चाहिए. वो मतलब on a very genuine, on a practical basis, year on year, if you're able to generate that, then मतलब you are, you've really cracked it essentially, right? यार बहुत सारे VCs नहीं कर पाते इतना रिटर्न तो जनरेट स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के बाद. Yeah, तो उनका absolutely. जो IRR होता है VC फंड का 10 साल में 15-20, सबका नहीं होता. We've gone through the breadth of, I think, to a degree of the financial products that people can sort of look at, etc. I think I have one last question for you, and we can try and understand a little bit better. Is that how important would you say is a financial advisor or an investment advisor specifically in an individual's financial journey, right? Like, and how can a beginner or anyone for that matter make the best use of their services? सो सी फाइनेंशियल एडवाइजर फाइनेंशियल प्लानर का ऐसा है कि आई वुड से कि ऐसा नहीं आपको नेसेसरी है. अगर आप थोड़े कैलकुलेशन सीख सकते हो, थोड़ा बेसिक्स सीख सकते हो इन्वेस्टिंग के बारे में, सो यू कैन ऑल्सो मैनेज योर मनी ऑन योर ओन अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट. Especially early 20s, early 30s तक maybe you might not need a financial planner, financial advisor. As long as आपके पास टाइम है रिसर्च करने का, चीजें समझने का, you could manage that on your own also. उसके बाद होता है टिपिकल लोगों के पास टाइम नहीं बचता, so you're outsourcing that job to someone who is actively following these two, actively who can do that more quickly than you. Yeah. So एक वो रीजन होता है आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हायर करने का. दूसरा, अगर आप हायर कर रहे हो देन ट्रस्ट दैट पर्सन. जैसे आप डॉक्टर को ट्रस्ट करते हो, राइट? Obviously आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करोगे, बट यू वुड स्टिल ट्रस्ट देयर कॉल. सो व्हेन यू आर हायरिंग समवन देन ट्रस्ट देयर कॉल, दैट्स व्हाट आई वुड से. अदरवाइज आप खिचड़ी पकाने जाओगे, आप कुछ बोलोगे, वो कुछ बोलेगा, तो ऐसा नहीं, तेरे मतलब ऐसा बीच का कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलेगा. इट्स इफ यू हैव टू, अगर आपको कुछ ढंग से वेल्थ क्रिएट करना है या कुछ अचीव करना है, देन यू हैव टू फॉलो वन स्ट्रेटेजी. इट कैन नॉट बी मिक्स ऑफ टू स्ट्रेटेजीज. मिक्सचर नहीं हो सकता. सो एक जब जैसे आपका सरप्लस बढ़ता जाता है, आई थिंक देन यू कैन स्टार्ट कंसिडरिंग हायरिंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल प्लानर, बिकॉज फिर वो एक थोड़ा और डिटेल लेवल पे एसेट एलोकेशन कैसे और फाइनली कैसा होना चाहिए, या जो नए नए इंस्ट्रूमेंट्स भी आ रहे हैं उसमें कितना पैसा जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए. जब आपका सरप्लस कम होगा अर्ली इन योर करियर, वैसे भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में आप पैसा नहीं डाल पाओगे. तो फाइनेंशियल एडवाइजर भी आपको यही रेकमेंड करेगा, मे बी स्टिक टू एन इंडेक्स फंड या एक छोटा सा FD या लिक्विड फंड में थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दो, लॉन्ग टर्म के लिए इंडेक्स में कर दो. तो बट हाँ, जैसे जैसे सरप्लस बढ़ता है तो हायर एडवाइजर, ताकि आपका एसेट एलोकेशन, आपकी मतलब आपका डाइवर्सिफिकेशन और थोड़ा बढ़ते जाए. इवन इफ यू वांट टू ट्राई आउट डिफरेंट एसेट क्लासेस, यू कैन ट्राई दैट विद प्रॉपर एसेट एलोकेशन. सो एसेट एलोकेशन के लिए ही मतलब हमारा सबसे मेन जॉब एसेट एलोकेशन एज फाइनेंशियल प्लानर्स, लाइक बेसिकली व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग. स्कीम सिलेक्शन, लाइक जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हम करते हैं उसमें से 100% में से 70-80% टाइम इज स्पेंट ऑन एसेट एलोकेशन. उसके बाद आखिरी का 20-30% टाइम इज स्पेंट ऑन सिलेक्टिंग द स्कीम्स. बट पीपल आर, when people usually do their investment planning, they spend their most of the time on selecting the schemes या selecting the investment instrument. और उसमें criteria एक ही होता है, सबसे ज्यादा रिटर्न. So if you can learn to do that on your own, well and good. If you can't do it, then hire an advisor and get that done thing rightly for yourself. Great. I think appreciate this conversation. I think it's very enlightening. You made a lot of points, and I think if I had to summarize, maybe it's really about having that discipline if you're able to maintain it, right? And being able to identify these different opportunities through, let's say, an investment advisor on your own, through your own mistakes that you make. And once you sort of got your comfort level or your comfort factor, depending on what your risk profile is, what is your financial goals, what is the capital base that you're working with, you can then probably consider, if an investment advisor is required for you or if it's not, etc., etc. But no, I really appreciate this, Anmol. It was an absolute pleasure to have you here on our podcast at Wright Research. Your insights on financial planning and strategies to achieve, this financial success, and the fact that you've gone into such depth with us on some of these examples, and talked about a few of your case studies, let's say, and how maybe listeners can apply that on their own lives. So yeah, really wanted to thank you for your for sharing your wisdom here. Yeah. Thank you so much, Siddharth, for having me here. I had a great time. Yeah, thank you so much. So to all our listeners, we hope you had found this conversation with Anmol as enriching as I did.
You can feel free to reach out to Anmol on the socials attached at the bottom of this video. They'll be attached in the description as well. You can also find him on LinkedIn. He shares a bunch of really sort of intriguing and sort of thought-provoking articles there. Also, just remember, the path to achieving your financial goals may seem daunting, but with effective planning and strategy, you can always sort of reach that. So as always, stay tuned for more financial wisdom in our upcoming episodes. I hope you found this video helpful. Don't forget to like, share, and subscribe the video. Until next time, here's to achieving your financial goals in 2023.